Good morning. Online students, am I audible? Let me know. Last two questions were remaining of this section. We did this, right? A digit greater than 3. This question we did yesterday. A digit n greater than 3. Digit meaning single digit, not a number. Digit we are talking about. Divisible by 3, but not 6. What is such a digit? Digit should be greater than 3. It should be divisible by 3, but it should not be divisible by 6. Okay, digit divisible by 3 कौन से? Which are the digits divisible by 3? 3, 6, 9. But we want n greater than 3, so not 3. Then n not divisible by 6, so not 6. So there is only one such digit. Question is, which of the following is divisible by 4? Put n in these options and check which of them is not divisible by, which of them is divisible by 4. Here you will have 18, here you will have 27, here you will have 22, and here you will have 28. Which is divisible by 4? 28. Very easy question. कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था. This question again a very easy question which we did yesterday. We have this 8-digit number and question says this leaves remainder 0 when we divide it by 3, meaning this is divisible by 3. Remainder 0 का मतलब होता है this is divisible by 3 or 3 is a factor of this number. And we know when does 3 divide this number? When some of the digits are divisible by 3. Can find sum of the digits. Find out what is the sum of the digits of this. थर्टी प्लस बी. बी है ना? Sum of the digits is 30 plus b, and now we want this 30 plus b to be divisible by 3. So what can be value of b? 3 also should b also should be divisible by 3 because 30 is divisible by 3. So for entire summation to be divisible by 3, we need b also divisible by 3. So b can be 0, b can be 3, b can be 6, or b can be 9. Question is, how many values of b are possible? How many are possible? 4. So answer is here 4. Okay. Very easy question. Used to come in olden period. Now ऐसे देखने को नहीं मिलता ज्यादा. CSE 2019. Again a very simple question based on addition. Addition करना है. We have a number 136 is added to 5b3 and the sum obtained is 7a3, where a and b are integers. It is given that 7a3 is exactly divisible by 3. Then what are the only possible value of b is? This is given that this 7a3 is divisible by 3. Two informations are given. Firstly, 136 plus 5b7 is 7a3. That is given. What else is given? This 7a3 is divisible by 3. Now, try it out.
Question is value of B. Ashwini, question is value of B, not A. What is the answer? Okay. In this addition, you have two unknowns. You have two unknowns, na? Here you only have one unknown. This second information that this is divisible by 3. So you can comment about this directly. What can A be? A क्या क्या हो सकता है? 2, 5 और 8. Put here and check. इसका मतलब क्या है? 7A3 minus 136 is 5B3. यही है ना इसका मतलब. चेक करके देख लो. अगर चेक नहीं करना है तो you what you can do is let us first try to add 6 plus 7 13 3 carry forward 1 3 plus carry forward 1 plus something is A, okay, and then 5 plus 1, so 1 carry forward has to come from this to be 7, है ना? So for this A to be greater than 10, we need B greater than or equal to 6. Which is the value you said, which is greater than or equal to 6? There is only one value of B that is possible, and in that case, what is A? What is A is 8, and what is B? 7 plus 6, 13, 3, 1. 3 plus 1, 4, plus something is 12. What is something? This is 8, na? 4 plus something. B was 8. Right, B is 8. 8 plus 3 plus 1, then A would be 2. Right? Or you don't want to do all these things. Here you got 3 alternatives for A. ये तो directly आ गया. You have 3 alternatives for A. What were the alternatives? 7 plus 3, 10. 10 plus A should be divisible by 3. That is given. So 10 plus A should be divisible by 3. So A can be 2, 5 or 8. Now in this subtraction, put 2, put 5, put 8 and check. What values of 5B3 are you getting? Most important thing is, are you getting 5 here? That would differ. That would determine the unique nature of this B and A. Only one subtraction would satisfy this equation. Okay. क्या है आंसर? कर लिया? हाँ, आंसर क्या था अल्टीमेट? Final answer is D, na? Of this question, D. Yes, you were right, Ashwini. I thought they have asked for other value, that is A, but they have asked for B, so answer would be D. ठीक है, चले आगे. Last question. Again, you don't need to put pen on paper. You can just do it by observation.
Yes, Ashwini, that is correct. क्या लग रहा है? बी लग रहा है. A is definitely true, and there is no doubt about it. Addition, subtraction, whenever both the expressions are divisible by same number, then addition of those two expressions or surds would be divisible by that number. There is no doubt about it. Then third, R into S. R into S, each of them R and S are both divisible by 5. So एक 5 R में है, एक 5 S में है. 1 5 is here, 1 5 is here. So total there are 2 5s, at least 2 5s. So it would be divisible by 25. Again, no doubt about it. Right? In multiplication, we have both R and S divisible by 5. So 5 appear once here and in R and once in S. So it appears at least twice. And 25 is nothing but 5 twice. 5 square है ना 25. So this is obviously true. Then what remains? B or C? Now again B or D. In D, R is divisible by 5. So R square is also divisible by 5. What would be the unit place of number ending with 5? 5 again. Any number ending with 5, when we square it, it will again have 5 at the units place. We have seen this. So R square would be divisible by 5. Similarly, S square would be divisible by 5. So addition would be divisible by 5 again. But for second, it is not necessarily divisible by 10. We can take example 5 plus 10. 15 not divisible by 10. Right? आप पहली बार आए हो? अच्छा अच्छा ठीक है. Some things you may not understand क्योंकि this is कितना 5th lecture है 6th है आज 7th है आज 8th है आज. हाँ अच्छा तो आज 8th लेक्चर है अकॉर्डिंग टू देम. मुझे लग रहा था 5th है बट एनीवे. फर्स्ट लेक्चर वाज इंट्रो अपना. उस दिन हमने पढ़ा नहीं था कुछ. फ्रॉम सेकंड डे वी हैव स्टार्टेड अरिथमेटिक. तो वैसे 7th लेक्चर होगा ये. ठीक है. तो ऑफ कोर्स आप सीधा 7th डे पे आ रहे हो तो थोड़ा सा मे बी डिफिकल्टी हो सकती है. एनीवे वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू सेक्शन टुडे. तो होपफुली यू अंडरस्टैंड. इफ यू डोंट यू कैन आस्क और यू कैन वॉच द लेक्चर्स. उसमें कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क. नो प्रॉब्लम. ठीक है. ये सिंपल था. अदरवाइज अल्टरनेटिव वाज पुट वैल्यूज एंड चेक. Take 2 cases in one case or take 3 cases rather just to be safe. In case 1 you take both values ending with 5 meaning 5 and 15 ले लो. उससे चेक कर लेना. In second case take 5 and 10
ending one number ending with 5, one number ending with 0. And in third case, take 10 and 20, both number ending in 0. Whatever remains true in all cases would be true in general. Whatever will be violated in any one of these cases is the answer, which is not necessarily true. Not necessarily, matlab not always true. Okay. ठीक है, simple था question, very easy question. You could do either using your basic knowledge of properties of addition and multiplication, or you can put values and check, whatever suits you. The next is very easy section, something which you have done multiple times throughout your school days. This is our BODMAS rule. This is basically when you have multiple operation in the same expression, which operation should you do first, which operation should you do second, which operation should you do third, etc. It is basically about order in which the calculations are to be followed. These are rules, these are universal rules in which using which we calculate complex expression which may have multiple operations within one expression, right? इसका डिफरेंस पता है आपको? एक्सप्रेशन, ऑपरेशन, इक्वेशन नहीं? Okay, we have numbers and we have unknown variables. We have been using variables, we have not introduced them properly, but anyway, we use variables like x, like y, like z. What do we mean by variable is their value is not fixed. They can vary at their will. They could be any number system we choose. So they could be real number, they could be rational number, they could be integers, whatever we want. We have introduced them from our side. And these are numbers like 1, 2, 3, 5, minus 7 and so on. They could be integers, they could be again rational numbers, they could be irrational numbers or real numbers. Any numbers, whatever we want, those numbers we can use, their value is fixed. Numbers are not variable. तुम्हें पता है number अगर 2 है मतलब 2 है. It does not have any other value, it is fixed, right? So these are constants, constant numbers. These are variables, they can take variable values. So when I say something like x plus 1 could be anything, x could be anything. If x is integer, then x plus, if x is natural number, what is natural number? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The way we count naturally, natural number 1, 2, 3, 4. So x plus 1 could be, we can start, x can be 1, so x plus 1 would be 2, x can be 2, 3, 4. So x plus 1 could have any one of the values. But what we do usually is, we put additional condition on these variables. When we put condition on the variable, that variable takes specific value. For example, if I say x plus 1 is equal to 7, then I have put condition on that variable. This also has to be true. So in that case, x can take only one value, which is x is equal to 6. So that variable is now having fixed value. Anyway, we'll see all this in detail when we'll study equations, linear equations. But for now, these are variables, these are constants. And what is expression? Expression is a term that has constants or variables multiplied together or divided together. Okay. So something like 5x square. This is one expression. There is multiplication sign in between this. 5 into x square. This is one term. It is called expression. Or 5x square divided by y. Again, only multiplication and division. So this is one expression. This is again separate expression. And when we, let us say, add this, these are two separate expressions separated by addition. Two expressions are separated either by addition or subtraction. If you don't understand, don't worry, we will be revisiting it when we will study linear equation. अभी हमने वो पढ़ा नहीं है. We will first finish our arithmetic, then we will study geometry, and then we will study linear equation. That is our chapter number 3. Okay? 4-5 क्लासेस के बाद उधर आ जाएंगे हम लोग.
मे बी 4-5 भी नहीं लगेगा, 3 क्लासेस पे भी. फाइन. सो दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन. एंड when we enter our equality sign and write something on the other side, anything, it could be again number or expression, this becomes equation. Equation मतलब equality sign उन दोनों के बीच में, LHS पे कुछ है, RHS पे कुछ है, that is equation. ठीक है. These are again terminologies, we will revisit it, don't worry. हाँ, so BODMAS rule is when we have such an equation, पहले कौन सा ऑपरेट करें, बाद में कौन सा ऑपरेट करें. What order should we follow when we have to simplify or find value or resolve this kind of expression that we may have in front of us? BODMAS is acronym that stands for bracket, order, division, multiplication, addition and subtraction. BODMAS. That is how BODMAS is. B is bracket. Firstly, we should resolve the brackets. Whatever, see, there is example also here. So, if I have this example, I have to find value of this expression. Okay? If I have to find value of this expression, I have to first resolve bracket. What is bracket? Bracket is here 4 minus 2. पहले ये करना पड़ेगा. What is 4 minus 2? So, we have 2 here first. Rest of the things remain same. Then order. Where is order? 2 raised to 3 is order. Right? Order, exponent, power, anything you may want to call. Then I have to find this 8. Rest of the things follow as it is. Okay? Minus 6 है ना. Fine. Now we have our division, multiplication and addition, subtraction. So here we have plus sign, here we have minus sign. So this is one single expression separated by these two plus sign. This is nothing but I can write it as 5 into 2 by 2. सिंप्लीफिकेशन के लिए, ये तो अभी हॉरिजॉन्टली लिखा है इसलिए थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा. यही है वो, 2 और 2 कट जाएगा. what would remain? 5. So this is nothing but 5. Now ये एक मल्टीप्लीकेशन है, 8 into 2, that is 16. What remains? 3 plus 5 minus 6 plus 16. What is this? You can simply add directly. 8 minus 6, 2 plus 16, 18. So entire value of this is 18. This is how you will use BODMAS rule. Bracket, order, division, multiplication and addition, subtraction. In that order we will do operations. Let us first solve few sample questions. I am picking random questions. Try it out.
नहीं हो रहा क्या डिवाइड अच्छे से? अच्छा, ट्वेंटी सिक्स कर दो ये। हो गए सारे? हाँ 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 हाँ, 17 इंटू 5 स्क्वायर है ना वो। पॉइंट पे कैसे आएगा यार? 17 इंटू 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 17 है वो। 17 इंटू 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 17। You can just cut directly. Huh? This is one single expression ना, separated by addition and subtraction. बीच वाला एक ही टर्म है पूरा. That is one single term. When we have numbers separated by only multiplication, division, or their powers, it doesn't matter the order which you follow. Same is the case with addition subtraction. कोई भी ऑर्डर में कर दो आंसर वही आएगा. थर्ड ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हाँ हाँ पॉइंट्स में आएगा. 30 प्लस 17 क्या होता है? हाँ क्या होता है? अच्छा एक काम करते चलो सिंप्लीफाई करते इसको. लेट अस ऐड ब्रैकेट हियर. अब ठीक है. ओके, आई नीड आंसर्स. हो गया सारे? ऑल ऑफ यू गाइज, यू नीड मोर टाइम. टाइम चाहिए और कितना चाहिए? ओके लास्ट बचे 2 मिनट चाहिए. हो गए सारे?
हो गए सारे, वेरी गुड। निरंजन क्या चल रहा है? हो गए लास्ट, ओके। ओके, लेट अस सी फर्स्ट का आंसर क्या है। एवरीबडी इज गेटिंग 2। फर्स्टली यू हैव टू रिजॉल्व द ब्रैकेट। दिस इज 9 minus 9, 0, 0 into 10 to the power 10, 0. So this becomes dead, redundant. Now we will have to just add 0. Okay, then we look at these two terms. This is one term, this is another term, and this is third term. Now this is one term 1 plus term 2 minus term 3. That is what we have to do. What is this term 2? 17 into 5 square divided by 17 is nothing but 5 square, right? 17 into 5 square, which is 25, divided by 17. So it is 25, right? So we have 25 here. And the third term, 3 into 70 divided by 7. 7 10s are 17. 10 into 3 is 30. So we have 30 here. 25 plus 7, 32 minus 30 is 2. Everybody got 2? सबका आया 2 फर्स्ट का। Okay, what is the answer of second question? -2. सबका आ रहा है -2. Okay, this is 2, 5 minus 3, and this is 11 minus 3 is again 8, right? 17 minus 2 into 2 cube. 2 cube is 8. 8 into 2 16. So this is nothing but, this is 16, this is 13, and this is 8 into 4 divided by 2. Again 8 into 4 by 2. 32 by 2, 16. So this entire thing is also 16. Now this minus 16 minus 32, and 17 plus 30 is 13 is 30. 30 minus 32 would be -2. कोई भी ऑर्डर में कर लो, पहले 17 minus 16 कर लो, 1 आएगा, then 1 plus 13 कर दो, 14 आएगा, 14 minus 16 -2. Order will not matter when we have addition subtraction together or multiplication division together. किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बॉड मास को एकदम लिटरली मत लेना, बॉड मास को एकदम लिटरली नहीं लेता था। तो whenever you say BO and DM, so DM you can do MD as well, कोई फर्क नहीं पड़ता within a term, value would be same. Same is case with AS, addition subtraction. You can do this subtraction first. मैंने क्या किया, -16 first किया, which will be -32, and then addition किया, order change किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं करना है तो मत करो, बस करना है तो कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड क्वेश्चन 1, everybody is getting 1. Okay, what do we have here? 5 square into 7 divided by this bracket is 27 minus 22 is 5. So ये 5 and one of these 5 would be cancelled and will remain with 5 into 7, 35 here. 30 plus 17 is 52 divided by 26 is 2, and 2 divided by 2 is ultimately 1. Okay,
एंड लास्ट क्वेश्चन, सबका 10 आ रहा है? ओके, आई गेस यू आर एबल टू डू दिस बॉड मास थिंग फेयरली. इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा बॉड मास में. वेरी इजी थिंग टू डू. एग्जाम में आएगा क्वेश्चन. इफ द क्वेश्चन कम्स इन एग्जामिनेशन ऑन दिस बॉड मास रूल, इट वुड बी just to eat your time, nothing more than that. Question would not be tough. You can definitely attempt. Try to calculate quickly. That would be your only goal. For example, this PYQ. Yes, this PYQ you can see. They are saying this dollar means divided by, at means multiplied by, hash means minus, and find value of this expression. Just write down the expression and find out the value. कोई इश्यू नहीं है. वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें ज्यादा. 9 आ रहा है आपको? सबका आ रहा है 9? सही. There is nothing more in this BODMAS rule. We'll again revisit this when we'll study fractions. BODMAS rule remains exactly same for fractions. Nothing will change, except our answers might be in fractions. Fraction addition, fraction subtraction, which we may have to perform. उससे ज्यादा कुछ बदलेगा नहीं. सॉल्व करने की जरूरत है मुझे? No, everybody is getting 9. Okay. In this month, you will have one sectional test based on whatever we'll cover. It would be held around 20th. 20th इस month के 20th नवंबर के अराउंड. आप सब लोग वापस आ जाओगे ना दिवाली से, तब तक छुट्टी लेके, छुट्टी एकदम एंजॉय करके आके एग्जाम दे देना. विल कीप फर्स्ट टेस्ट इजियर, डिफिकल्ट नहीं रखेंगे. नेक्स्ट मंथ से विल इंप्रूव द डिफिकल्टी लेवल as and when we'll cover more and more syllabus. Plus you solve your worksheets. If you need more questions to solve from next month, because अभी तो पढ़ा हुआ है, फ्रेश है सब कुछ, तो अभी तो आएगा ही तुम्हें सब कुछ इसमें से. नेक्स्ट मंथ प्रॉब्लम है ना, नेक्स्ट मंथ भूल जाओगे ये सब. सो फ्रॉम नेक्स्ट मंथ we'll start with question series on these topics which you might have forgotten but which are very very important, on similar pattern or even more difficulty level. और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है. Okay, Lavanya is saying unfortunately such easy questions will never come now. Not true. This time also we have seen many easy questions have come. तो ढूंढने की दे रही थी, आपको ढूंढने पड़ रहे थे वो इजी क्वेश्चन. इफ यू कुड पिक द इजी क्वेश्चंस, आराम से वो वी हैव सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एज वेल. ऐसा कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन आते रहते. देन आवर next topic is HCF and LCM. Again, one of those topics from which questions get asked frequently. This year also there was one question based on LCM. ज़्यादा नहीं था, एक ही था, but still there was a question. We have seen what do we mean by factor or divisor or multiple. What do we mean by factor? When one number is divisible by another number is called factor of the first number. Factor and divisor वगैरह we have seen this term in our long division. We write something like this, right? We divide, let us say, one number A by some number B. This is called dividend. This is called divisor. This is called quotient. And ultimately you subtract, do something, and whatever you get is called remainder, right? So when remainder is 0, we say that this B is a factor of A, or A is a multiple of B, or A is divisible by B. सबका मतलब एक ही है, सबका मतलब एक ही है. ठीक है.
So when the remainder is 0, we say that B is factor of A, or A is multiple of B, or A is divisible by B. All mean exactly the same. That is why HCF and HCF slash GCD लिखा है ना. HCF is highest common factor. So here F stands for factor, and GCD is greatest common divisor. तो डिवाइजर और फैक्टर का मतलब सेम है, कोई चेंज नहीं. कोई किसी को डिवाइजर बोल सकता है, कोई किसी को फैक्टर बोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, so we have seen what is the meaning of this divisor or factor. Remainder 0 होता है तो number with which we try to divide a bigger number is called divisor or a factor of bigger number. और मल्टीपल का भी मतलब सेम ही है. When remainder is 0, A which was being divided, which was dividend, was multiple of B, right? So 6 is multiple of 2, 8 is multiple of 4, 12 is multiple of 2, 3, 4, 6, 4B, 6B, right? 60 is multiple of 1, 2, 3, 4, 5, 6, then 10, 12, 15, etc. Right? Multiple. Multiple समझ गए ना? So what I was saying is 60. It is multiple of 1, 2, 3, 4, because remainder is 0 when we divide 60 by these numbers. और इनके टेबल में आता है वो 5, 6, then 10, 12, 15, 20, 30 and 60. 60 is multiple of all these numbers, right? Multiples of 3 would be 6, 9, 12, 15, etc. And divisors of 12 would be 1, 2, 3, 4, 6, etc. These are divisors of 12. These are multiples of 3. Divisors मतलब बड़े वाले नंबर के जो फैक्टर्स है वो. मल्टीपल्स मतलब छोटे वाले नंबर के मल्टीपल्स है वो बड़े नंबर. कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम इसमें? But we are not interested in all the factors or divisors or multiples. We are more interested in specific one of them. So अगर कोई बड़े नंबर के बहुत सारे फैक्टर्स है, so all factors are smaller than that number, right? Again, and there is another number, उसके भी कुछ factors है. If we have two numbers, we have factors of number 1 and we have factors of number 2. ठीक है? Some of those factors may be common. For example, if I take, let us say, 6 and 8. What are the factors of 6? 1, 2, 3 and 6. What are the factors of 8? There are some common, like 2 is common. There could be multiple common factors if we take even bigger numbers. So whatever is the highest of those common factors is what we call this highest common factor, or HCF, or greatest common divisor, or GCD. दोनों का मतलब सेम है. HCF और GCD is same. Let us read what we have written here. HCF or GCD of two number is the highest possible number that divides the both numbers, or that is the factor of both numbers. ऐसा सबसे बड़ा number, the highest such number, that is factor of both the numbers, or that divides both the numbers. For example, here we have one example. 18 and 27. What are the factors of 18? These are the factors 1, 2, 3, 6, 9 and 18. Right? Factors of 27 are 1, 3, 9 and 27. No other factors. There are some common factors, like 3 is common.
9 is common, and highest of 3 and 9 is 9. So 9 is HCF, or highest common factor of 18 and 27. HCF of 18 and 27, highest common factor or greatest common divisor. 9 is the number that represents the number, greatest number that divides both these numbers. Okay, कंसेप्ट समझ गए? बहुत सारे फैक्टर्स है दोनों नंबर्स के. 2 is just a case. There could be, let us say, 5 numbers, 5 big numbers I have given you, and I ask you to find out what is the highest common factor of these 5 numbers. Find कर ही सकते हो. Each of those 5 numbers would have multiple factors. उनमें से बहुत सारे कॉमन भी हो सकते हैं. The highest among those common factors is HCF. Simple. Highest among those common factors is HCF. 3 का केस देख सकते हैं. Let us say, so if you have, let us say, 3 numbers, 360, 720 and चलो 300. If I give you these 3 numbers, you want to find highest common factors among these 3 numbers. So what are the factors of 360? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है, 8, then 9, 10, 12, then 15, 18, then 20. Yes, now we are pairing. अब सब पेयर में आएंगे. 15 के साथ कौन आएगा? डिवाइड बाय 15, 24 आएगा. नेक्स्ट वुड बी 30, नेक्स्ट वुड बी 36, नेक्स्ट वुड बी 40, देन वी हैव 45, then we have 60, then we have 72, then we have 90, then we have 120, then we have 180, and then we have 360. Right? ठीक है. What about 720? ये सारे तो आएंगे ही, because 360 into 2 is 720. So these factors would be factors of 720 as well. I went on finding factors. Starting से देखता क्या? 1 है, yes. 2 है, yes. 3 है, yes. यहां तक आया 12 तक. 12 भी है, 15 भी है. 15 के बाद नेक्स्ट है 18, वो भी मिला मुझे. 18 के बाद नेक्स्ट ढूंढा, 19 तो नहीं है, 20 है. बट अब ये 18 इंटू 20 360 है. ये कंसेक्यूटिव है ना, एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू इज 360. तो अब इसके बाद जो भी फैक्टर्स होंगे वो ऐसे होंगे, ये और ये इंटू 360 होंगे. दिस इंटू दिस वुड बी 360, दिस इंटू दिस वुड बी 360, दिस इंटू दिस वुड बी 360. तो इन नंबर से करस्पॉन्डिंग डिवाइड कर करके पेयर, मतलब उतने ही फैक्टर्स आएंगे. वरना ये 360 तक हर एक नंबर थोड़ी मैं चेक करता. आई कैन नॉट चेक एवरी नंबर मैन्युअली टिल 360. राइट. 720 मोर और लेस सेम ही फैक्टर्स होंगे. कोई फैक्टर चेंज होगा? बस 16 होगा इसका फैक्टर एडिशनली यहां पे, बिकॉज वन मोर 2 इज कमिंग अप, so that 2 would also be a factor, and 16 के corresponding 45 would correspond with 16. 45 into 16 is 720. Other factors more or less would remain same. Another factor would come, additional factor 16 would come and 720 would come. कोई और आएगा फैक्टर? चलो आएगा तो आएगा, कॉमन तो नहीं होगा वो, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं वो.
We are interested in common factors. So in between 720 and 360, all these are common factors. If I take additional one number, I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, then 8 है नहीं है नहीं है ना. 400 को 8 डिवाइड करता है लेकिन तो 100 को नहीं करता, तो 400 माइनस 100 को भी नहीं करेगा. दिस इज नथिंग बट 400 माइनस 100 ना, है ना. 400 को करता है 8 डिवाइड, पर 100 को नहीं करता है, तो सब्ट्रैक्शन को नहीं करेगा. 300 को अगर तभी करता जब इसको भी कर देता 3 डिवाइड. ये नहीं चमक रहा तो डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो. 8 3 जा 24 प्लस रिमाइंडर इज 60. इट इज नॉट इन द टेबल ऑफ 60. 8 नहीं है, 9 नहीं है. सम ऑफ द डिजिट्स नॉट डिविजिबल बाय 9. 10 यस, 11 नो, 12 है ना. 13 नहीं है. 15 16 होगा. 80 नहीं है, 16 कहां से होगा. 20 है. अब आ गया फिर 15 इंटू 20 फिर 300 होता है. अब बस इसके करस्पॉन्डिंग ढूंढते रहो. 12 इंटू 25, 10 इंटू 30, 6 into 50, then 5 into 60, 4 into 75, 3 into 100, 2 into 150 and we have 300. Okay, just manually factor find किया मैंने. फैक्टर क्या है दिखाने के लिए वापस से, कोई जरूरत नहीं थी करने की, बट we should be clear about what do we mean by factors of each number. ये सारे इसके फैक्टर्स है. 300 के ये सारे फैक्टर्स है. 300 को डिवाइड करते हैं सारे. एवरी नंबर डिवाइड 300. कोई डाउट इसमें? नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन कॉमन फैक्टर्स अमंग दीज 3 इंटीजर्स. 1 कॉमन है. कॉमन देखो तीनों जगह पे कौन कौन है. 720 पे ये हर सब है और एडिशनली 2 फैक्टर्स है, तो कॉमन तो नहीं है वो. यही सारे हैं, मतलब 320, 360 और 720 में यही कॉमन है. बट नाउ वी हैव टू सी इसमें और इसमें कौन से कॉमन है बताओ. एक है 2 इज कॉमन. मोर नेक्स्ट हाँ 15. बस these are the common factors. What is the highest common factor? This is your highest common factor. 720 इसका डबल है ना. ये फैक्टर्स तो होंगे ही, मतलब इसके इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पर हमें वैसे भी कॉमन चाहिए. इससे ज्यादा वाले इधर लिखे हैं मैंने. एक 2 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो यहाँ पे 8 है, वहां पे 16 आ जाएगा. हाँ क्योंकि 2 एक्स्ट्रा फैक्टर. हाँ हाँ ओके. क्या होता है, कोई भी नंबर ले लो. लेट अस टेक 60. इफ आई वांट टू फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 60, एक तो या तो मैं मैन्युअली चेक कर लूं 60 नंबर हर कोई 59 60 तक, तो वो तो बहुत टीडियस हो जाएगा. इसलिए व्हाट वी डू, वी go till then 10. Let me write 10 here. अब क्या आ गया, 10 into 6 60 आ गया. When we find the next factor, वो divisible होगा 60 से, so that would be factor of 60. When I divide 60 by that number, मुझे कुछ तो नंबर मिलेगा, राइट? छोटा मिलेगा 60 से पक्का.
तो वो दूसरा नंबर लेट अस से मैं 12 से डिवाइड करता हूं, तो आई विल गेट 5. It should be smaller than 5, smaller than 60, and 5 भी 60 का फैक्टर ही होगा क्योंकि I can write this as well. So these two both are factors. Both are factors का मतलब है दोनों भी आने चाहिए फैक्टर की लिस्ट में, और एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग ही आएंगे वो, बिकॉज ऑफ दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. समझ रहे हो नहीं समझ रहे? दिस इज जस्ट अ शॉर्टर वे. इन प्रैक्टिस वी वेरी वेरी सेल्डम नीड टू लिस्ट आउट द फैक्टर्स. कभी जरूरत नहीं पड़ती, बट पता होना चाहिए. अगर वहां पे सब कुछ एकदम भूल ही गए तो एकदम क्लास 1 पे रिलाय करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए. वहां पे हम कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे यूज करके एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे. वी विल नेवर यूज दिस लिस्टिंग ऑफ फैक्टर्स मेथड, क्योंकि ये बहुत लंबा जाता है. अभी देखो ना कितना टाइम लगा सारे लिस्ट करने में फैक्टर्स. वी टू लॉट ऑफ टाइम. यहाँ पे तो है लग्जरी, वो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होगी वो लग्जरी. So in examination hall we cannot employ this method to find out HCF. We have to look for something else which is much simpler, much faster, and we will see those methods. But in case वो confusion हो जाए कुछ examination hall में कि यार इसमें क्या था, highest वाला powers लेते थे या lowest वाले लेते थे, तो फिर ठीक है छोड़ दो वो method, वापस आ जाते हैं listing of factor. इसलिए we just need to know कि how to list down the factors if I don't remember any other thing. एग्जामिनेशन हॉल में वो नहीं होना चाहिए कि यार छोड़ना पड़ रहा है क्वेश्चन बिकॉज आई डोंट रिमेंबर द सिंपल फैक्ट. दैट इज हाउ इट हैपेंस व्हेनेवर यू इंक्रीज दिस नंबर बियॉन्ड 10 एंड यू डिवाइड इट बाय 60. ये वाला फिर कम हो जाएगा ना, करस्पॉन्डिंगली यू गेट 12, 15, 20, 30 एंड 60 एज रिमेनिंग फैक्टर्स. सो यू कैन लिस्ट डाउन द फैक्टर्स. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्लियर है पक्का? नो इश्यूज. वी जस्ट वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो देयर वुड बी मल्टीपल कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर एंड हाईएस्ट अमंग देम इज समथिंग वी कॉल एज HCF और GCD. मतलब सेम है. GCD इज आल्सो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. दैट इज आल्सो एग्जैक्टली द सेम. नाउ वी वांट टू फाइंड HCF of two numbers. In practice, we want the ability to find out HCF of two numbers. So there are multiple methods. I have listed them down. You can choose whichever suits you best. I have my recommendation for you that you should employ. But if you find that difficult, you can always stick with other methods and find out the answer. Ultimately, सही आंसर निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेथड से. ठीक है, जो भी आपको सबसे ठीक लगता है उस पर स्टिक करो, प्रैक्टिस दैट एंड आंसर सही निकालो बस, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं. फर्स्ट इज मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. लेट अस सी हियर ओनली. फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन इज फाइंड जीसीडी ऑफ 54 एंड 117. 54 and 117. We want to find out firstly prime factorization of these two numbers. Can you find that? Find out prime factorization. Prime factorization is basically representing this number as multiplication of prime numbers or their powers. Prime numbers are called building blocks of number system. We can represent each and every number as multiplication of prime numbers or their powers, and this representation is unique and it simplifies lot of things for us. It is a very powerful tool in number theory, and we'll employ that to find out HCF and LCM. We have seen the methods to find out prime factorization, and you can check out that lecture. If you find any difficulty, you can ask, we can revisit it. क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ? This is 2 into 3 cube, right? And this is 3 cube है 3 square into 13. ठीक है.
So we have again seen this. Any factor of 54 would be something like 2 to the power something, 3 to the power something, क्योंकि उतने ही प्राइम नंबर है उसके पास और कुछ आ ही नहीं सकता फैक्टर में उसके. And this something is 2 की पावर should be less than equal to 1 and 3 की पावर less than equal to 3, क्योंकि उतने ही है मैक्सिमम उसके पास देने के लिए. Any factor of this 54 would be something like this. For example, you can see that 9 is a factor of 54, right? 9 is a factor of 54. So 9 is nothing but 3 square. यहाँ पे 2 raised to 0, 3 raised to 2 है. Every factor will be of this form of 54. ठीक है? And every factor of this 117 would be of the form 3 raised to something, 13 raised to something. तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? कॉमन प्राइम नंबर. Check out the common prime number. And because we want the maximum common factor, take the maximum power out of minimum power out of these two. क्योंकि कॉमन भी चाहिए ना. इसके पास 3 है, 3, बट इसके पास 2 ही है. He has only 3 twice. He has 3 thrice. तो जितने बार है दे सकते हो, दे दो, ये मैक्सिमम है. This is HCF. Just write down the prime factorization. C, which is the common factors, and whatever the maximum power you can allot that. That would be your HCF. Let us revisit our question. We wanted to find out HCF of 360, 720 and 300. We already know the answer by manually listing down the method. We know the answer should be 60. Let us check इससे आता है क्या. Find out the prime factorization. कर सकते हो क्विकली. बताओ. 360 is डिवाइड द नंबर 10 into 36 है ना, तो अब 10 and 36 का इंडिविजुअली फाइंड करो. 36 is 9 into 4. 9 into 4 is 36. So we have 2 into 5 into 4 into 9. It is nothing but 2 cube into 3 square into 5. This is your prime factorization. 720 क्या होगा? 720 is just nothing but 2 into 360. 4 कहां से आया? 3 यहाँ इधर. 16 से थोड़ी डिविजिबल है. 360 is not divisible by 16. हाँ 720 यहाँ पे बस एक फैक्टर आए, 2 would be added because 360 into 2 is 720. 360 we already have. So this is, and 300 is ये होगा. This is nothing but 3 into 100 है ना, and 100 is 4 into 25. 4 into 25 ये है, into 3 ये होगा. ठीक है. क्विकली नहीं कर पा रहे हो क्या? कोई बात नहीं, एग्जाम में टाइम होगा. फॉर एवरी क्वेश्चन विल हैव 2 minutes, which is more than sufficient time. Now tell me common factors क्या क्या है इसमें, इसमें और इसमें. This is, let me write it here only. We have 2 cube into 3 square into 5. 2 is common, 3 is common and 5 is common. 2, what is the maximum power you can allot to 2? Square. वहां पे तो 3 4 है, लेकिन here we have maximum power 2. 3 maximum power you can allot is, and 5 maximum you can allot is, what is this? 4 into 3, 12 into 5, 60, which is what we got manually listing down the factors. ठीक है. मेथड समझ गए क्या कर रहे हैं हम लोग, एंड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज एवरी फैक्टर ऑफ एनी नंबर
can have only those prime powers in its factorization that there are in bigger number. So any factor of 360 can only have 2, 3, 5 in their factorization. कोई भी फैक्टर ले लो 360 का, यही नंबर होंगे घूम फिर के, एंड पावर शुड बी लेसर देन दैट आर इन 360. And because you want common factors, we are taking common prime factors firstly, which are 2, 3, 5, and then we are allocating maximum power we can to those respective prime factors. So 2 maximum powers we can allocate is 2, because here are only 2 times 2, जो ऊपर ज्यादा है, but because we want common factor, we can allocate maximum factor 2. For 3 we can allocate maximum power 1. वहां पे तो 2, 3 है, but here we can allocate maximum power 1. And for 5 here there are 2 times, but here we have only once. So maximum power we can allocate is once. That is how we can find out HCF. ठीक है, that is our method number 1. This you should prefer over any other method. That is my recommendation. But if you find other methods easy, you can do that. Now you do one question. I'm taking random numbers. Find out the HCF of these two numbers. And this method is the only method which can give you HCF of any number of numbers at the same time. मैं तुम्हें 5 नंबर्स दे दूं तो भी एक साथ HCF निकाल सकते हो. पांचों के बस प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है और कॉमन फैक्टर देखने हैं पांचों में. इन अदर मेथड्स दे आर एप्लीकेबल फॉर ओनली 2 नंबर्स. हाँ 1400. Okay. Okay. ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हो? क्या है? नहीं आ रहा? ओके. 48 ठीक है. आपका आगे 48 40 आ रहा है, 48 आ रहा है. ओके 40 आ रहा है, 40. ओके गुड. सबका सेम आ रहा है तो अच्छी बात है. कॉन्फिडेंस आता होगा तुम लोग को. सही होगा हमारा, सबका सही आ रहा है. व्हाट इज 1080? फर्स्टली डिवाइड इट इनटू स्मॉलर फैक्टर्स. 108 तुम्हें पता है 12 का पहाड़ा आता है. 12 का टेबल ऑफ 12 9s are 108. So we can see 12 into 90, which is 12 is nothing but 3 into 4, 3 into 2 square, and 90 is, what is 90? 9 into 10. So 9 into 10. हो गए सारे प्राइम नंबर्स. अब सबको एक साथ लिखो, बाकी सब छोड़ के. So we have 2 cube, 2 plus 1, 2 cube, 3 की पावर 1 plus 2 again 3 cube, and we have 5. ये होगा, ये आ रहा है 1400. So we can, सामने दिख रहा है 14 into 100, which is 2 into 7 into 100 is 4 into 25. Right? 4 I can write 2 square, 25 I can write 5 square. So ultimately it is 2 raised to 3 into 5 square into 7. What is the common prime numbers? 2 है and 5 है.
These are the only common prime numbers. 2 की power maximum common 3, 5 की power 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है लेकिन वहां पे 1 ही है. Maximum power we can allocate is 1. What is this? 8 into 5? 40. Right. एक और करना है, just to be sure. तुम लोग दे दो नंबर, एक नंबर तुम दे दो. 522. सेकेंड नंबर आप दे दो. 600. ओके. थर्ड नंबर 225. 1 ही जीसीटी लाओगे तुम. आप क्या करें. फोर्थ नंबर ठीक है, निकालो जीसीडी ऑफ ऑल दोज 4 नंबर्स. हाँ दिख रहा है 1 आ रहा है. 1 कुछ सुधार दे क्या उसको. चलो 5 कितना करते हैं, 50 करते हैं. चलो ओके हो सकता है. लास्ट नंबर को 25 डिवाइड करता है. 5 25 ओनली 5 ना. ओके सबका आ रहा है 5. स्टिल डूइंग. ओके कर लो हो गया. 5 आ रहा है. Simple method, not that difficult. In examination hall, you will not get 4 numbers nor the difficult numbers. You will get easily factorable numbers, so it will be calculable. And anyway, you will have to calculate for 2 numbers almost all the time. कुछ हो सकता है कि जब बस HCF पे ही question हो, that they only want you to calculate HCF, then they could ask for bigger problem or tougher calculations. But most probably the questions are something else, which is a word problem,
the part of the question or question is based on finding out the HCF. That is how it happens. HCF or LCM, anything. LCM पे ज्यादा आते हैं वैसे सवाल, but if you know how to calculate HCF out of these number using prime factorization, LCM is also very easy. एक ही स्टेप का प्रोसेस है वो भी, ये भी एक ही स्टेप का प्रोसेस था कि बस लिखना है और कॉमन देखना है, उसमें भी वही करना होता है, बस एक चीज ज्यादा है, एक चीज अलग है, ज्यादा नहीं है, सेम ही चीज है, एक ही स्टेप लिखना है उसमें भी. We'll see that. But firstly, let me show you how to calculate HCF using other methods. If you find that easier, you can do that. So here are some examples that I have given. So 512, 288. 512 is 2 raised to 9. 288 is 2 raised to 5, 3 square. So what is the LCM? 2 raised to 5 होगा. 2 is the only common prime number. Maximum power you can allocate is 5. So HCF is 32. Second method is method of listing factors. वो भी हमने करके देख लिया. We just list down all the factors of both the numbers. Check कर लो कौन से कॉमन है. Highest among them is HCF. जो हमने लिस्ट बनाया था ना बड़ा सा 360 के लिए, 720 के लिए, that is this method of listing factors. Factors of 54, these are the factors. Factors of 117, these are the factors. Common factor 3 and 9, highest common factor 9. इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, छोटे नंबर है तो ये आसान भी है. In case you forget all the other methods, this is something you can never forget. लिस्ट करके ही तो देखते हैं, फैक्टर पूछा है ना तो फैक्टर बता देता हूं मैं कौन से हाईएस्ट देख लूंगा उसमें से. दैट इज हाईएस्ट काउंट फैक्टर बाय लिस्टिंग द फैक्टर्स. इसमें कुछ अलग नहीं है, बस लिस्ट करना है, हाईएस्ट देखना है. इट इज टाइम कंज्यूमिंग फॉर लार्जर नंबर्स, स्मॉलर के लिए चल जाता है. एंड थर्ड is the last method that is popular at school levels and wherever you will read in other places for CSAT. This will be the method they will be following, but this problem of this method is it is applicable for only 2 numbers. तो अगर 4 नंबर का जैसे निकालना है तो पहले 2 का निकालो, फिर वो नंबर जो आएगा नया जी HCF उसका और थर्ड का निकालो, और फिर नया जो HCF आएगा उसका और फोर्थ का निकालो. ये करना पड़ता है. We don't need that in prime factorization. उसमें एक स्टेप में आंसर चारों के लिए आ जाएगा. इसका ये मेथड का वो लिमिटेशन है. प्लस इसमें वी हैव टू परफॉर्म लॉन्ग डिवीजन, सो थोड़ा सा लंबा जाता है कभी कभी, बट दिस इज ऑल्सो गुड इनफ. इतना डिफिकल्ट नहीं है कुछ प्रोसेस. अगेन लेट अस फाइंड बाय डू बाय एग्जांपल. व्हाट वी डू इज, क्वेश्चन इज वी फाइंड द जीसीडी ऑफ 54 and 117. वी डिवाइड लार्जर नंबर बाय स्मॉलर नंबर. 117 by 54. फैक्टर आएगा 2 का क्वोशंट में, माइनस 108 होगा एंड विल हैव रिमाइंडर. नाउ दिस क्वोशंट, sorry, the divisor of earlier division becomes dividend now and the remainder becomes the new divisor. ये टर्म्स आपको पता है ना, डिवाइजर डिविडेंड क्वोशंट में बोलता रह रहा हूं. So 9 6 is 54, remainder is 0. So this last divisor is your GCD. Let us see for our case. Let us see for 360 and 300. We know that GCD is 60. अब हमें आंसर तो पहले से पता है 60 आना चाहिए. What is the bigger number? What is the smaller number? 300 is smaller, obviously. So we divide 360 by 300. We have 300 ones are 300. So minus 300. So remainder is 60. Now this 60 becomes our new divisor and we divide 300 by 60. ये नंबर अंदर आएगा, रिमाइंडर होगा वो बाहर वाला हो जाएगा. तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 60 into 5 300, रिमाइंडर इज 0. तो जहां पे भी रिमाइंडर 0 आता है, द लास्ट डिवाइजर इज योर HCF और GCD. Yes, the answer to the last question was 5. ठीक है, ये मेथड समझ गए. समटाइम्स ये थोड़ा बड़ा भी हो सकता है. अभी अगर तो ये तो 2 स्टेप में आ गया रिमाइंडर 0, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट
every time in 2 steps you may get remainder 0. Let us take example. Let's take 17 and 95. Small enough numbers, but if you try to divide, you have 95, you have 17. क्या आएगा? 17 quotient would be 5. 17 5s are 85 minus 85. You get 10. You divide by 10 to 17. 10 ones are 10. You get 7. You divide it by 7 under 10. 7 ones are 7. You get 3. Here 7 comes. 3 ones are 3. You get 4. Okay, sorry. 3 twos are 6. You get 1. And now you can divide 3 by 1. 1 3s are 3 and remainder is 0. This is the HCF. Any two numbers you start with, you will always end up with remainder 0. And यहाँ पे तो 1 आएगा ही कभी ना कभी. 1 आएगा तो we are done. उसके आगे कुछ नहीं हो सकता. हाँ, because 1 is the factor of every number. So 1 is always common factor. 1 तक आने की नौबत पड़ रही है, मतलब 1 ही है. 1 हो गया तो खत्म. So लंबा भी जा सकता है ये कभी कभी. यहाँ पे तो हमें करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज एक प्राइम नंबर था. 17 इज अ प्राइम नंबर. तो ओनली फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स आर 1 एंड इटसेल्फ. और ये 95 को डिवाइड करता तो था नहीं, तो जीसीडी तो 1 ही होना था, है ना. मेथड समझ गए ये वाला भी. Whichever you find suitable or easier, you can prefer that, no problem. Answer would be same by any method you use. See here another example, 512 and 288. So we divide 1, again divide 64, again divide, and finally for divisor 32 you get remainder 0. So 32 is the HCF for GCD. Any issues in HCF so far? Any questions? क्या क्या कर सकते हो आप? You can find out HCF of two numbers. Yes, by any of the three methods. Preferable method I would recommend prime factorization, because एक स्टेप में आता है और मल्टीपल नंबर्स का एक साथ आता है. ये अगर डिवीजन वाला करोगे तो यू हैव टू स्टार्ट बाय 2 नंबर्स ओनली. 3 नंबर से तो डिवाइड कर नहीं सकते हो. एक तुम्हारा डिविडेंड हो सकता है, एक डिवाइजर हो सकता है. यू कैन नॉट कैलकुलेट HCF ऑफ 3 नंबर्स इन वन स्टेप. एक गो में नहीं कर सकते. यहाँ पे 2 नंबर का निकालना पड़ेगा. देन इफ आई हैव थर्ड नंबर, ये HCF ऑफ दिस 2 प्लस थर्ड नंबर, उनके साथ सेम प्रोसेस करना पड़ेगा. And you have to do it in the multiple steps. That is the limitation of this method. But so let us say I have to find HCF of 512, 288 and some number, let us say 64. Fine. तो मैंने first 2 का निकाल दिया. HCF is 32. Now I have to find HCF of 32 and 64. Yes. So I can divide and find out. यहाँ पे तो 64 जानबूझ के लिया मैंने, of course. But in general that is how you can find. ठीक है. These are properties of HCF. HCF of 2 or more numbers is always a factor of all the numbers. Obviously factor है तभी तो highest common factor है वो. HCF would be factor of every number, right? Highest common factor is factor of all the numbers individually as well. Yes. If any number divides all the given numbers, it also divides the HCF. So if any number divides all the numbers, meaning अगर कोई और common factor है, HCF से तो छोटा होगा, because HCF is highest common factor. So other common factors would be smaller than HCF. ये highest है ना ये बंदा. HCF is the highest among all the common factors. So other common factors HCF से छोटे होंगे, right?
our claim is they divide HCF as well. रीजन बहुत सिंपल है. Whenever we are trying to find out HCF of two numbers, हमने क्या किया? We wrote down the, let us say n and m are two numbers. We wrote down their prime factorization, right? कुछ आया वो 2 raised to 5, 3 raised to 7, 5 square and 7 ऐसा कुछ आया. इसका आया कुछ 2 raised to 3, 3 raised to 7, 5 raised to 9 ऐसा कुछ आया. Let us say. Then क्या किया हमने? We claim or we know that any factor of these two numbers would be of the form 2 raised to something, 3 raised to something and 5 raised to something. Any common factor ऐसा ही दिखेगा क्योंकि उतने ही प्राइम नंबर्स है उनके पास. यहाँ पे कुछ और हो सकते हैं 13, 17 ऐसे and so on. But common prime numbers are only this. Common prime numbers इतने ही है. So any common factor would have to look something like this, right? And HCF क्या था? HCF was highest. यहाँ पे जितना भी आ सकता है उतना दे दिया था उसको. Other common factors would be smaller than जो HCF को allocate हुआ. HCF को क्या allocate हुआ यहाँ पे? यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 7 हुआ and यहाँ पे 2 हुआ. That would be HCF. But other common factors क्या क्या हो सकते हैं? यहाँ पे 2 की जगह 0, 1, 2, 3 भी आ सकता है. 0, 1, 2 भी आ सकता है. ये इसकी जगह पे 0, 1, 2 ऐसे 6 तक आ सकता है. 7 भी आ सकता है. यहाँ पे 0, 1, 2 आ सकता है. So any of this power can come here and become factor of that number, common factor of that number rather. है ना? यहाँ इनमें से कुछ भी नंबर इधर डाल दो तो कॉमन फैक्टर होगा वो दोनों का. बट एवरी सच कॉमन फैक्टर वुड बी डिवाइडिंग HCF क्योंकि HCF मैक्सिमम है ना. इधर अगर मैं 2 डालूंगा तो 2 raised to 3 होगा ऊपर. HCF इज 2 raised to 3 और यहाँ पे अगर 2 raised to 2 होगा तो ये 2 कट जाएगा और 2 बचेगा ऊपर. रिमाइंडर 0 रहेगा. तो HCF के सारे फैक्टर्स वुड बी फैक्टर ऑफ HCF नहीं अदर कॉमन फैक्टर्स के सारे फैक्टर्स वुड बी फैक्टर ऑफ HCF. Yes, so HCF is naturally a number such that any common factor of given numbers is a factor of HCF itself. Empirically भी देख सकते हैं. हमने जो एग्जांपल देखा था 60 वाले फैक्टर्स कहाँ गए? हाँ 360 वाले. So these were the common factors and HCF was 60. बट अगर देखोगे ना सारे कॉमन फैक्टर 60 को डिवाइड करते हैं. देखो तुम 60 के सारे फैक्टर्स है. 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, 12 है, 20 है, 30 है, 15 है, राइट? सो एवरी कॉमन फैक्टर डिवाइड्स HCF. दैट इज अवर इन्फरेंस. रीजन इज ड्यू टू अवर प्राइम फैक्टराइजेशन. हमने देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा हम जब HCF निकालते हैं वी गिव हाईएस्ट पॉसिबल पावर्स टू द कॉमन फैक्टर. But other common factors would be other powers are also possible. No need for highest possible power. छोटे पावर भी दे सकते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फैक्टर बन जाता है. समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो कोई बात नहीं, रट लो. वो लास्ट सॉल्यूशन है बट समझने की कोशिश करो. इतना बहुत डिफिकल्ट नहीं है चीज. लास्ट क्लास में हमने ये सब देखा था कि फैक्टर कब होता है. We had seen this in the last class that when is one number factor of another number, right? In their prime factors, you need less than what is there in the dividend. The same thing, same argument we are extending to the HCF. ठीक है? So property number 1 says that HCF of 2 or more numbers is factor of all the numbers that are there. Then second property is saying if there is any other common factor, that factor is a factor of HCF as well. Third property, HCF is always less than or equal to all the given numbers, right? तो मतलब HCF 2 नंबर का निकाल रहा हूं, let us say 50 और 100. If I want HCF of these two numbers, 50 का मैक्सिमम फैक्टर तो 50 होगा
50 से ऊपर तो नहीं जा सकता, वही बोल रहे HCF इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू गिवन नंबर्स, इससे बड़ा नहीं जा सकता दोनों से। HCF कैन एट द मोस्ट बी द स्मॉलर नंबर, जब ये स्मॉलर नंबर इसका फैक्टर होगा, राइट? क्योंकि 100 को 50 डिवाइड ही करता है, तो 50 ही इसका HCF है। 50 खुद को तो डिवाइड करता ही है एंड 100 को भी करता है, और 50 से ऊपर तो कोई इसका कॉमन फैक्टर है होगा नहीं, so that is why 50 is HCF. Then HCF of two prime numbers is always 1. Obviously, because for prime numbers only factors are 1 and itself. कोई और प्राइम नंबर होगा, उसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 and that prime number. So only common thing is 1. So HCF of two prime numbers is always 1. So for example 13 and 97, both are prime numbers, so HCF would be 1 directly. No need to calculate, no need to write prime factorization or divide or anything. You don't need to do that. HCF of a prime number and number which is not a multiple of it is always 1. HCF of a prime number and number which is not a multiple of it. So if we have a prime number, let us say 13, and let us take a number which is not multiple of this prime number, कोई भी ले लो, 40 ले लो. So HCF of these two will always be 1. Why? Because this prime number is nothing but prime number. In prime factorization, it is itself a prime, but another number would have some other prime numbers as factors, 2 raised to something, 5 raised to something, right? कॉमन होगा कुछ दोनों में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गिवन है कि दिस प्राइम नंबर इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर, सो देयर वुड बी नथिंग कॉमन. नथिंग कॉमन का मतलब है HCF वुड बी 1. पहला एग्जांपल मैंने वैसे ही डिजाइन किया था, व्हेन आई वांटेड टू शो कि कैलकुलेशन लंबा जा सकता है. आई हैड टेकन 17 and 95. One of them was prime number and other number was a number which is not a multiple of this prime number. तो 17 इधर किधर आता नहीं है, उसके और कोई फैक्टर नहीं है, तो GCD will be automatically 1. HCF of a prime number and some multiple of that prime number is that prime number itself. तो HCF of 17 and 51 क्या होगा? 17 होगा, क्योंकि 17 3 is 51. तो प्राइम नंबर जब भी आता है तो HCF would be either that prime number itself or 1. सीधा प्राइम नंबर तभी होगा जब दैट प्राइम नंबर इज फैक्टर ऑफ अदर नंबर्स. सो इफ आई से HCF of, let us say 7, 35 and 65, 63, what is the HCF? 7 प्राइम नंबर है, आ गया, तो HCF would be either that prime number itself or सीधा 1. वो प्राइम नंबर कब होगा? when that prime number is factor of all other numbers. 7 5 are 35, 7 9 are 63. So 7 is factor of other prime number, 7 is factor of itself obviously, so HCF is 7. Right? Here are some questions for you to try it out. Find out, question is same, find out HCF of following pair of numbers. होमवर्क है, अभी मत करना, होमवर्क है घर जाके करना. Tomorrow we'll check the answers. Again random numbers लिख रहा हूं, so
कुछ भी ले लो, क्या फर्क, आंसर सेम आएगा। अच्छा, फोर्थ का चेंज कर देते थोड़ा सा, तो 30:30 और इसको 12:90 कर, थोड़ा सा आपको चैलेंज। हाँ, एक ही तो चीज कर रहे हैं हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर से वो, हाँ 6 क्या है, 2 into 3 है ना, तो 2 into 3 पावर 50 है वो, करो। ये होगा ना प्राइम फैक्टराइजेशन, वैसे करना, ठीक है। फाइंड आउट दिस HCF as a practice. Next thing we want to learn is the one definition of co-prime numbers. Co-prime numbers. Co-prime numbers are those numbers whose HCF is 1. A pair of numbers are co-prime if their HCF is 1. HCF अगर 1 है किसी 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का, देन दे आर कॉल्ड को-प्राइम। टिपिकली 2 के लिए लिमिटेड है। अ पेयर ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड को-प्राइम नंबर्स इफ को-प्राइम मतलब साथ में प्राइम है, इट नीड नॉट बी दैट वो प्राइम नंबर्स है, दे बोथ कुड बी कंपोजिट नंबर्स बट देयर HCF इज 1, देन दे आर कॉल्ड को-प्राइम नंबर्स। कॉमन प्राइम कोई फैक्टर नहीं है, देन HCF वुड ऑटोमेटिकली बिकम 1, they are called co-prime numbers. The numbers do not have to be prime to be co-prime with each other. Of course, 2 and 5 their HCF is 1 क्योंकि दोनों भी प्राइम ही है यहाँ पे। 4 and 9 HCF is 1. Why? 4 is 2 square, 9 is 3 square. There is no common factor other than 1. 1 तो होगा ही हमेशा, तो HCF is 1. So common factor is 1. HCF is 1. So these are co-prime numbers. Again another example, 245 and 3. 3 is a prime number. इससे तो ये तो this is not divisible by 3. So there is no common factor. HCF is 1. So these are co-prime numbers. These are all examples of pair of co-prime numbers. कभी आ जाए गलती से definition तो we should know what it means. आएगा नया कुछ तो बहुत आसान आएगा, आसान क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए जस्ट बिकॉज वी डोंट नो द डेफिनेशन, ठीक है। इफ वन ऑफ द टू नंबर्स इज प्राइम देन नंबर्स आर को-प्राइम इफ अदर नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय प्राइम। वही बात बार बार बोली जा रही है, इफ अदर नंबर इज डिविजिबल बाय प्राइम देन HCF 1 नहीं होगा तो वो को-प्राइम नहीं होगा। इफ अदर नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय दिस प्राइम नंबर देन HCF is 1 and numbers are co-prime. Two even numbers can never be co-prime, obviously because 2 तो है ही common factor, so 1 तो HCF हो ही नहीं सकता। If HCF is not 1, numbers are not co-prime. Two consecutive numbers are always co-prime. 2 or 3, 4 or 5, 7 or 8, 11 or 12, 49 and 50, they are always co-prime because इंक्रीज एक के स्टेप से हो रहा है, कॉमन फैक्टर होगा तो एक ही होगा, है ना। तो फॉर एनी n and n+1
HCF इज ऑलवेज 1, कोई भी ले लो, 1 2 ले लो या चाहे 100 and 101 ले लो, 101, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 के कोई भी फैक्टर है, लेट अस से 2 इज अ फैक्टर ऑफ 100, राइट, तो 2 डिवाइड्स 100, so what is the next smallest number after 100 that divides that has 2 as a factor? 102, क्योंकि 2 के स्टेप से जाना पड़ेगा, 100 में 2 ऐड करना पड़ेगा ना अगला डिविजिबल नंबर देखने के लिए। बट अगर 1 ही करेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर भी कभी डिवाइड नहीं करेगा दोनों का कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं अदर देन 1, सो दीज आर ऑलवेज को प्राइम। दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट को प्राइम नंबर्स। एक डेफिनेशन ही है, बाकी सब प्रॉपर्टीज तो तुम अपने आप से भी डिवाइस कर सकते हो। इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज डेफिनेशन, व्हाट आर को प्राइम नंबर्स, एकदम ब्लैंक नहीं होना चाहिए इन केस द क्वेश्चन कम्स। नेक्स्ट थिंग वी वांट टू सी इज ऑफ कोर्स एलसीएम और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एचसीएफ पे वैसे कम बनते हैं, एलसीएम पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए एलसीएम, ब्रेक चाहिए 2 मिनट का, सांस लेनी है, ज्यादा हैवी हो रहा है तो बता दो, वी कैन स्टॉप फॉर 2 मिनट्स। ओके, विल टेक अ 2 मिनट ब्रेक, पानी वानी पी लो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू गाइस विथ मी? सो तो नहीं रहे हो? ठीक चल रहा है, समझ रहा है सब कुछ? If I am going too fast, you can say that and we'll reduce our speed. But this is our 7th lecture of arithmetic. Last year 4 classes में मैंने arithmetic खत्म किया था. So this year actually we are going very slowly. But doesn't matter because arithmetic से question भी बहुत सारे आए इस बार. हमने देखा इस बुकलेट में बहुत सारे PYQs है. In last 5 years, we have had 60 questions from arithmetic. Out of non-comprehension questions. So on an average, अगर 30 comprehension पकड़ो, 50 non-comprehension. तो 50 into 5, 250 में से 60 question at least आए. करेंगे ना? थोड़ा सा अपन कंफर्टेबल हो जाते हैं बेसिक चैप्टर्स में. सीधा हम एडवांस चैप्टर पे चले जाएंगे तो यू विल बी लॉस्ट, है ना? करेंगे, आराम से करेंगे. एग्जाम है मई में, कोई जल्दी नहीं. मई एंड में है ना एग्जाम. कब है डेट आई? 27 में. ठीक, वी हैव लॉट ऑफ टाइम. वो भी एक ऐसा चैप्टर होगा जहां पे विल गो स्लो बिकॉज क्वेश्चन आ रहा है और तो कोई रीजन है नहीं स्लो जाने का. तो समझना चाहिए. 9 क्वेश्चंस were there this year. Last year also there were 9 questions. So clearly they want us to focus on that. वहां पे भी हम सेम अप्रोच रखेंगे. वी डोंट गो बाय अननेसेसरी फैंसी फॉर्मूलाज विच यू कैनॉट रिमेंबर. वी विल फोकस ऑन बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स. एक होता है एडिशन प्रिंसिपल, एक होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. जो 9 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 6-7 क्वेश्चंस वुड बी सॉल्वेबल बाय दोस प्रिंसिपल. 1-2 क्वेश्चन आएंगे. इस बार चलो 4 थे, इस बार रेस्ट ऑफ द 4 क्वेश्चंस नीडेड मैन्युअल काउंटिंग. उसके लिए भी कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं थी. देयर आल्सो मैन्युअल काउंटिंग. विथ मैन्युअल काउंटिंग यू कुड हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन. तो वो भी है. मैन्युअल काउंटिंग भी कैसे करना, थोड़ा सा मेथोडिकल रहना पड़ता है उसमें बस. ऐसा कोई आउट ऑफ द ब्लू चीज नहीं करेंगे कि जो तुम्हें रेप्लिकेट करने में डिफिकल्टी हो. बिकॉज दैट इज द थिंग. अगर हम यहाँ पे 50 चीजें पढ़े और वहां पे तुम कर ही नहीं पाओ क्वेश्चन देखने के बाद, अगर वो क्लिक ही ना करे, कोई फायदा नहीं है इतना पढ़ने का. फिर उतनी ही चीजें वैसे ही पढ़ेंगे जो रेप्लिकेबल है. बेसिक चीजें अच्छे से करेंगे, बाकी तो ठीक है. बाकी छोड़ देंगे अगर उससे कुछ बहुत तोप आया था. तोप आता तो है नहीं, बस हवा बना के रखा है. मैं आपको बता रहा हूँ, सच में कोई डरने की बात ही नहीं है इसमें. इफ यू आर एबल टू डू दीज क्वेश्चंस, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ये भी मतलब हम थोड़ा सा डिटेल में जा ही रहे इन मैथमेटिकल पार्ट ऑफ इट. बिकॉज आई वॉन्ट यू टू हैव दैट बैकग्राउंड कि ऐसा ना लगे कि कुछ अगर थोड़ा सा इधर उधर का क्वेश्चन आ गया, अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है, यू विल स्टिल बी एबल टू हैंडल.
बट अगर नहीं है और वो तुम यार ये ऐसा किया था मैंने बट ऐसा एग्जैक्टली नहीं आया क्वेश्चन, तो कौन सा फॉर्मूला में कौन सा कहाँ पे अप्लाई करते रहो वही ढूंढते रह जाओ, वो नहीं होना चाहिए। बेसिक्स क्लियर हो, उससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। यूपीएससी स्टिक्स टू इट्स सिलेबस। अगर वो बोल रहे हैं कि 10th क्लास तक ही पूछेंगे तो वो 10th क्लास तक ही पूछते हैं। आप उनके कोर्ट में इस बार बहुत सारे केसेस हुए, इफ यू सी देयर रिप्लाई दे हैव सेड दिस, कि जो पीएनसी वगैरह भी वो उसके लेकर गए थे ना, दे हैव सेड कि दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ पीएनसी, दिस इज क्वेश्चन ऑन काउंटिंग। अगर आपका क्लेम है कि आपको काउंटिंग नहीं आती है, दैट इज ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ 10th क्लास सिलेबस। काउंटिंग तो है ही, हर चीज हर स्टेट में पढ़ाई जाती है, 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो आप क्या बोल रहे हो, है ही, हम चाहते ही नहीं थे आप पीएनसी से सॉल्व करें, आप क्यों उसे पीएनसी का सवाल पूछ रहे? दैट वाज देयर रिप्लाई कि बेसिक काउंटिंग से सॉल्व करना था, पीएनसी से नहीं करना था। तो हम ठीक है, उससे भी कर लेंगे। पीएनसी से अगर कुछ आसान हो जाए तो पीएनसी भी सीख लेंगे थोड़ी बहुत, और थोड़े ऐसे भी टॉपिक सीख लेंगे जो अब तक निग्लेक्टेड है थोड़े से, लेकिन कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं। जैसे इस बार दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन ऑन क्यूब्स। बड़ा क्यूब है, उसको कट कर दिया, हाउ मेनी फेसेस हैव 2 कलर्स, हाउ मेनी फेसेस हैव 3 कलर्स, हाउ मेनी फेसेस हैव नो कलर्स, एटसेट्रा। तो लास्ट 3-4 साल में एक भी सवाल नहीं आया था, बट दिस ईयर 2 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दैट टॉपिक। तो पता नहीं किस टॉपिक पे, कौन सा टॉपिक पे फिर से प्यार में पड़ जाए वो। 1-2 सवाल हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 1-2 सवाल है ना, 6 मार्क्स, 6 ना 2.5 सॉरी 5 मार्क्स। निगेटिव नहीं जाए तो अच्छी बात है, फिर तो 5+ हो जाता है ना, लाने तो 66+ है हमें। कॉम्प्रिहेंशन करेंगे यार, इसमें ये थोड़ा टाइम लग रहा है हमें अरिथमेटिक में, अदरवाइज अभी तक हम स्टार्ट कर देते। अरिथमेटिक के बाद देयर विल बी 1 क्लास ऑन ज्योमेट्री, देयर विल बी 1 क्लास ऑन 2 classes on linear equation. So after those, next topic is your comprehension. ठीक है, थोड़ा सा अरिथमेटिक, ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन हाथ में आ जाए ना, तो हम आराम से बाकी चीजें कर सकते हैं। ठीक है कॉम्प्रिहेंशन भी करेंगे हर क्लास में। we'll have 2-3 comprehensions. Again, I'll display on the board. You can read, you can solve, and then we can discuss how to go about it. Types of questions क्या होते हैं। But overall मुझे ऐसा फील आ रहा है कि none of you are uncomfortable in comprehension to that extent कि कुछ इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आता। आपका उल्टा ही है, जो लोग आप यहाँ पे आए हो, आपको मैथ्स में ही प्रॉब्लम थी मोस्ट ऑफ द लोगों को, कॉम्प्रिहेंशन में मोस्ट ऑफ यू डिडंट हैव प्रॉब्लम। हाँ, बिकॉज यू रीड एनीवे, वी रीड दोज टॉपिक्स। क्या कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेज कहाँ से आते हैं? यही टॉपिक से आते हैं, अपने इन्वायरमेंट से आते हैं, इकोनॉमिक्स से आते हैं, सोसाइटी से आते हैं, इसी टॉपिक्स पे घूम घूम के कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। यू ऑलरेडी नो दोज टॉपिक्स। डेमोक्रेसी कुछ लिबर्टी पे पूछ लेते हैं वो, है ना। हाँ नहीं, बट यू हैव आइडिया अबाउट द टॉपिक, वॉट एवर यू आर रीडिंग। देखो 27 आते हैं ना पैसेजेस, 20 पैसेज में मैं गारंटी देता हूं, अभी आप जाके पेपर देख लेना खोल के इस साल का, 20 पैसेज में कोई डाउट नहीं होगा तुम्हें, एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट द आंसर। बात क्या है? बात अगले 5-7 क्वेश्चन की है ना। अगले 5-7 क्वेश्चन के लिए यार कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही अनसर्टन है, कुछ भी आंसर दे देते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन, ये सब 5-7 क्वेश्चन तक लिमिटेड है। 20 क्वेश्चन तो ले लो, 5-7 के बारे में कितना सोचेंगे? आप पढ़ेंगे ना, मैं वो थोड़ी बोल रहा हूं, बट उसको उतना ये करने की कोशिश, वो करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 20 पैसेज में देयर वुड बी एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट द करेक्ट आंसर, ईदर इन योर माइंड और द क्लासेस आंसर कीज, जो भी वो लोग देंगे। 20 क्वेश्चन तो सेम ही होंगे, आंसर सबके होंगे, और तुम भी वही मार्क करके आओगे। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये नहीं कि सही मार्क करना, चैलेंज ये है कि वो सही मार्क 50 मिनट में नहीं करना, 30 मिनट में करना, वो चैलेंज है। क्योंकि अभी टाइम का क्वेश्चन वो आ रहा है, क्योंकि वो बहुत लेंथी क्वेश्चन कुछ डाल रहे हैं। तो बाकी जो तुम्हें 20 के बाद वाले जो 20-25 क्वेश्चन करने हैं टू गेट योर अटेम्प्ट टू 45-50, देयर यू नीड टाइम टू पिक एंड चूज द राइट क्वेश्चंस, जो इजी है, जो डुएबल है। अगर गलती से ऐसे क्वेश्चन पे स्टम्बल हो गए कि जो खाएगा तुम्हारे 15 मिनट, और उस पर तुम ईगो को लेके बैठ गए, या फिर उसमें तुम घड़ी को नहीं देखा, जो भी हो गया, देन यू विल फेस क्रंच देयर। अगर तुमने वहां पे भी टाइम खाया, यहां पे भी खाया, दैट इज व्हाई
from class 1 I have been focusing on reading speed. I have told you multiple times, work actively towards increasing your reading speed. That will reap you very good yields in CSAT as well as in mains. उसका बहुत फायदा होगा. Will there be any holiday for Diwali? On 12th there is officially holiday, but for 4 days I am not available. I am also going to home. So 11 to 15 है अपनी क्लास उस टाइम पे. वैसे भी नहीं होगी, क्या लगता है? 11 is Saturday, so 11 will have class. संडे की एक ही क्लास मिस हो जाएगी, 12th की. वो 12th को वैसे भी छुट्टी होगी क्लास को, कोई क्लास मिस नहीं हो रही है. आई एम अवेलेबल, मैं बता दूंगा. मैं तो हूं, मैं दिवाली के दिन भी ले लूंगा. हाँ, जब तक मैं खड़ा हूं तब तक क्लास है. मैं ले रहा हूं क्लास 11 को. आपको जाना है, आप जा सकते हो. आप जा रहे हो, घर जा रहे हो? ऑल ऑफ यू? नहीं होनी चाहिए क्लास. अच्छा, छुट्टी चाहिए क्या तुम लोग को? 11 की चाहिए? हाँ, 9 से चाहिए. ठीक है, तुम ले लो, अगले 4 महीने छुट्टी ले लो. विल रिज्यूम इन मे. अभी क्या, ये क्या होता है? एक दिन ठीक है, वी कैन. संडे की तो ऑफिशियली क्लास बंद होगा ऊपर, तो संडे को हम आ ही नहीं सकते. तो फ्राइडे को क्यों चाहिए? देखो, सैटरडे को एक दिन चाहिए तो ले लो. फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं दे रहा मैं. संडे को तो है ही, संडे तो मेरे हाथ में ही नहीं है. तो कितना चाहिए? अरे ठीक है, मैं दे दूंगा. यूपीएससी 27 का 28 को करेगी क्या एग्जाम? ये थोड़ी है. मेंस का भी डेट फिक्स्ड है, वो भी चेंज नहीं होता. हाँ, वो तो कोविड आना पड़ता है, फिर हो जाता है, ऐसे नहीं होता. ठीक है, लेट अस सी. कल तो है ही हमारी क्लास, कल तो आ जाओ, कल डिसाइड करेंगे. चले आगे. एलसीएम. एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. एलसीएम वो था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हम वहां पे वी वर टॉकिंग अबाउट फैक्टर ऑफ 2 नंबर्स. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स. मल्टीपल्स मतलब इनसे बड़े नंबर्स. So if you are talking about multiple of any number, let us say 2, simple number से start कर सकते हैं. What are the multiples of 2? 2, 4, 6, 8. So there would be infinitely many multiples of 2. For other number, we can have 3, 6, 9. There would be infinitely many multiples of 3. And same is true for other numbers. There are infinitely many multiples of all the numbers. तो बड़े होते ही जाएंगे multiple. And here we want to talk about common multiples of those 2 numbers. तो कुछ एक common multiple आ गया पहले, फिर और बड़ा common multiple आएगा, because we will multiply that common multiple, that will be also a common multiple. So common multiple can be infinitely many, और जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा हो सकता है कॉमन मल्टीपल, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग, मेकिंग नंबर बिगर एंड बिगर. तो कोई हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल का कंसेप्ट रिलेवेंट है ही नहीं हमारे, क्योंकि जितना बड़ा हो सकता है इट गोज टू इन्फिनिटी. बट नाउ इट स्टार्ट समवेयर. कहीं से तो कॉमन मल्टीपल बनना चालू हो जाएगा. जैसे इफ यू हैव 6 and 9, मल्टीपल्स ऑफ 6 आर 6, 12, 18 etc. मल्टीपल्स ऑफ 9 आर 9, 18, 27 etc. So here we have 18. Next thing we have 36, right? Next thing we'll have 54. Next thing we'll have 72. And all of these would be common multiples of 6 and 9. और वो बढ़ते ही जाएंगे. जितने बड़े बना सकता हूँ मैं 18 का टेबल, मैं कितने इंफिनिटी तक खींच सकता हूँ. 18, 18 into 1, 18 into 2, 18 into 3, 18 into 1 lakh, 18 into 5 lakh, 18 into anything. I can make it as big as I want. So there is no sense in talking about highest common multiple.
but it starts at 18. That is the first time common multiple appears. So that is where we want to talk about least common multiple, the smallest number that is multiple of both the numbers given. Least common multiple, LCM. There could be many common multiples like 18, 36, and least common multiple is 18. Okay, this is called LCM, least common multiple. We find out multiples of both the numbers and least among them is 18. That is called LCM. If I give you any two numbers, let us say m and n. Let us say m and n, right? And if I consider their product, m into n, is this m into n multiple of m? Yes. Is this multiple of n? So this is always a common multiple of m and n. Multiplication of the two numbers is always a common multiple of two numbers. So whatever LCM that we want has to be smaller than this. कोई नहीं तो ये तो है ही, ये कहाँ जा रहा है? Right? This product of two numbers is always a common multiple of both the numbers. So 6 और 9 जो लिया, 6 into 9, 54 is a common multiple of obviously 6 and 9. So whatever common multiples we have or whatever LCM we want, that has to be smaller than 54. 54 से तो है ही. अगर बाकी कोई नहीं मिला वहां तक तो 54 तो है ही. So at the most common multiple can be multiplication of these two numbers. उससे बड़ा तो होता ही नहीं common multiple. LCM मतलब LCM is never bigger than product of two numbers, क्योंकि ये तो है ही common multiple. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं हमें, right? So LCM can be smaller than or less than or equal to this multiplication. इससे बड़ा नहीं होगा LCM कभी, क्योंकि then this will be LCM. This is common multiple of both the numbers. अगर इससे छोटा कोई मिलता नहीं है तो this will be LCM. Again, जैसे HCF में किया था, we want to find out LCM now. So we'll see various methods of finding LCM. HCF find किया था, LCM of find करेंगे. First is of course listing of factors, listing of multiples. So what we do, we simply enlist multiples of both the numbers till multiplication of the two numbers. मतलब let us take any two numbers. Let us take 18 and let us say 6. We'll enlist the multiples of 18 till we get 18 into 6. या फिर थोड़े स्टार्ट करके देख लो कहाँ तक जाना चाहिए. Then we can think about what to do. Then it's multiples of 18, 36, 54 and so on. Maximum we'll have to go till 108, क्योंकि वो तो है ही common multiple. 18 into 6 वो तो है ही common multiple, that we know for sure. तो maximum वहां तक जाना पड़ सकता है, but नहीं जरूरत पड़ेगी तो अच्छी बात है. Then multiples of 6, 12, 18, 24 and so on. Maximum will have to go till 108, not more than that. What is the common multiple? 18. Yes. 36. Yes. So what is LCM? 18. Least common multiple. By listing down the factors or listing down the multiples. We can do that for other numbers as well. For example, let us say 9 and चलो लेते हैं 15 and 20. Another numbers we can list down the multiples. 15, 30, 45, 60. For 20 we can have for 20, 40, 60. So LCM is 60. The least of the common multiples. Common multiple आ गया, दोनों लिस्ट में आ गया, and smallest of them is our LCM. This is convenient for smaller numbers. Smaller number के लिए तो कर ही सकते हैं, या फिर दूसरा कुछ याद ही ना आए तो कर सकते हैं,
Maximum we'll have to go would be till 15 into 20, 300. ये तो है ही कॉमन मल्टीपल, दैट वी नो फॉर श्योर, उससे ज्यादा आगे जाना ही नहीं पड़ेगा, दैट इज सर्टेन. Fine. That would be method number 1. Then our favorite method of prime factorization. Let us take the same question that is there in your booklets. You want to find out LCM of 40 and 54. Let us say. Find out the prime factorization of these two numbers. 40 is 8 into 3, 8 into 5 ना, 8 into 5, and 54 is 27 into 2. ठीक है. First step is of course always to find out prime factorization. Earlier we wanted factors of this number, but now we want multiple of this number. Multiples, and not only any multiples, we want common multiples of this number, right? So if any number is multiple of 40, if any number is multiple of 40, उसमें ये तो आना ही पड़ेगा, 2 आना ही पड़ेगा, 5 आना ही पड़ेगा, एंड 2 की पावर एटलीस्ट 3 भी आनी ही पड़ेगी, बिकॉज 40 के मल्टीपल्स की भी बात हो रही है ना यहाँ पे. और इफ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 54, उसमें भी 2 आना ही पड़ेगा, 3 भी आना ही पड़ेगा, एंड 3 क्यूब आना पड़ेगा, बस 3 नहीं चलेगा. मल्टीपल है ना उसका, उतना तो आएगा ही एटलीस्ट, ज्यादा भी आ सकता है, दैट वी डोंट नो, बट एटलीस्ट इतना तो आएगा ही. 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, और एटलीस्ट कितना आएगा, 3 तो आएगा ही, क्योंकि ये 3 आना चाहिए. इफ 40 के मल्टीपल की बात हो रही है तो 2 एटलीस्ट 3 टाइम तो आना चाहिए. ज्यादा बार आ सकता है वो प्रॉब्लम नहीं है, पर एटलीस्ट 3 टाइम्स आना चाहिए. यहां पे एटलीस्ट 1 टाइम आना चाहिए 2, पर 3 टाइम आ चुका है तो 1 को कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसे 3 यहां पे तो आने की जरूरत नहीं है, बट यहां पे है तो यहां पे एटलीस्ट कितना आना चाहिए, 3 बार तो आना ही चाहिए. वैसे ही 5 यहां पे एक बार है, एक बार आना चाहिए एटलीस्ट. सो हियर एटलीस्ट वाला केस हमने ले लिया, एंड व्हाट वी वांट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. दिस इज योर लीस्ट कॉमन मल्टीपल. हाँ, जो भी है वो कैलकुलेट कर लेना. हमने क्या बोला, दैट प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, देन एनी कॉमन मल्टीपल 40 का जो भी मल्टीपल होगा, 40 का जो भी मल्टीपल होगा उसमें ये तो होना ही पड़ेगा 2 क्यूब इंटू 5. तो 2 क्यूब तो आना ही चाहिए और 5 भी आना ही चाहिए. और अगर वो 54 का मल्टीपल है तो 2 तो आना ही चाहिए, पर 2 ऑलरेडी आ चुका है तो उसकी टेंशन नहीं है. और 3 क्यूब भी आना चाहिए तो 3 क्यूब आ गया. तो ये तो लीस्ट केस है ना, इतना तो आना ही चाहिए. दैट इज व्हाट वी वांटेड, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो लीस्ट वाला केस ये है. ठीक है. अब इसका बता दो, these two numbers, let us say m is equal to 2 raised to 7, 3 square, 7 raised to 5 and 11 cube. n is equal to 2 raised to 9, 3 raised to 3, 7, तो 7 है ही नहीं इसमें, 5 square into 13 square. What is LCM of these two numbers? Tell me. हाँ, LCM is equal to 2 to the power. इसमें 7 तो आना ही पड़ेगा, बट इसके लिए 9 तो आना ही पड़ेगा. तो बड़ा कौन सा है, 9. 3 की पावर
3 हैज टू कम, 2 है, इसके लिए 2 हैज टू कम, बट इसके लिए 3 हैज टू कम, और 3 आ रहा है तो 2 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आना जरूरी है, एटलीस्ट की बात हो रही है। तो 3 raised to 3, देन 5 2, देन 7, देन this is your LCM। एक स्टेप निकल जा रहा है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। HCF निकालना होता सेम 2 नंबर का, तो HCF क्या होता? 2 raised to 7, 3 raised to, बस that would be your HCF, this is your LCM। अब एक स्टेप में दोनों निकाल पाओगे जस्ट बाय लुकिंग एट द प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, सिंपल है, कोई चैलेंजिंग नहीं है। नो नीड टू कैलकुलेट एनी अदर बाय एनी अदर मेथड इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस। एक स्टेप में आ जाता है, एकदम क्लियरली दिख जाता है, प्राइम नंबर के फॉर्म में दिख जाता है। नोटिस वन मोर थिंग, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूं, if I multiply LCM into HCF, I'll have 2 raised to 16, 9 plus 7. I'll have 3 raised to 5, 2 raised to 16, 3 raised to 5, और ये फिर ऐसा का वैसा आएगा। तो 5 स्क्वायर, 7, 5, 11 क्यूब, 13 स्क्वायर, राइट। और इन दोनों को अगर मल्टीपल करो तो क्या आएगा, देखो, 2 raised to 16, 3 raised to, and 5 स्क्वायर, 7, 5, 11 क्यूब, 13 स्क्वायर, सेम है। हाँ, नहीं, आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग दीज टू नंबर्स एंड आई एम मल्टीप्लाइंग LCM एंड HCF। हाँ, फैक्टर कैसे मिलेगा? LCM इज लीस्ट, यू विल गेट द कॉमन मल्टीपल, सम कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट इज इंफिनिटी, इनके मोटिल इंफिनिटी। LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो एक डेफिनेटली कॉमन मल्टीपल होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स इज डेफिनेटली अ कॉमन मल्टीपल, वन ऑफ द कॉमन मल्टीपल, बट इट इज नॉट नेसेसरीली LCM। LCM उससे छोटा भी हो सकता है। हाँ, वन ऑफ द कॉमन फैक्टर, बस कॉमन फैक्टर उससे बिगर बहुत सारे हो सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करो जिस नंबर से मन करे, एवरी नंबर विल बी कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, सॉरी। A common multiple can become as large as you want them to be. The point is, LCM into HCF is your multiplication of 2 numbers. That is one of the properties of LCM and HCF. LCM into HCF is M into N. Okay, that is written in your booklets as well. Multiplication of 2 numbers is same as LCM into HCF of those 2 numbers. Okay, then next is we can find out LCM using this relation as well, that LCM into HCF is product of 2 numbers. So find out HCF like we always do, and then product divided by HCF is your LCM. That is also something you can do. ठीक है, LCM निकाल पाओगे, HCF निकाल पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन। फॉर एग्जाम्पल अगेन क्वेश्चन इज फाइंड LCM ऑफ 40 and 52। HCF फाइंड किया, HCF ऑफ these 2 number is 2, LCM is 10 into 44 by 2, so 1080. That was our initial answer as well. Now we want to see some important properties of LCM. HCF की properties जैसे हमने देखी, we want to see some properties of LCM as well. All the numbers are factors of their LCM. Multiples है ना इन नंबर के, तो obviously number would be a factor of those numbers. LCM is always greater than or equal to all the given numbers. Of course, we are taking multiples starting from
that number into 1, number into 2, number into 3, etc. So these are multiples. The least thing that can happen is number itself. उससे छोटा नहीं जा सकता. So LCM is always greater than or equal to all the given numbers. And of course LCM you can calculate for more than 2 numbers as well. That is clear. उनका सबका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो और जो हमने 2 नंबर के लिए किया वो 3 नंबर के लिए करो, 4 नंबर के लिए करो. In fact, whatever problems that I have given you for HCF, calculate LCM of those numbers as well. ठीक है, same questions data same, but find out LCM of those numbers as well. And try doing it using our prime factorization. Third, LCM of two numbers is one of the numbers if and only if other number is factor of the second number. So LCM of 4 and 16 is 16 because 4 is factor of 16. Right? LCM of, let us say, 10 and 20. What would be LCM of these two numbers? 20 itself, because इसके कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे? 10, 20, 30 ऐसे होंगे. इसके क्या होगा? 20, 40. बट ये तो आएगा ही इफ इट इज देयर इन द लिस्ट समवेयर. इसका तो लिस्ट ही उधर से बिगिन होता है. वो जहां पे खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू होती है. तो अगर वो है तो दैट वुड बी द लिस्ट. If that is the multiple of this number, then that would be the least. वैसे ही 4 and 36 लिया, because 4 is divisible, 36 is multiple of 4, तो ये कहीं ना कहीं ये 36 आएगा ही, और इसका तो स्टार्ट ही 36 है, so 36 would be LCM, and that is the only place that can happen, that one of the numbers is LCM only if other number is factor of that number. तभी हो सकता ही है, otherwise नहीं होगा. Right? Then LCM of two coprime numbers is their product. Coprime मतलब HCF is 1, or if you use it with our this relation, if HCF is 1, then LCM is product of those two numbers. Right? कोप्राइम का मतलब क्या है? कोई प्राइम फैक्टर कॉमन है ही नहीं, तो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन एंटायरली अलग है, कुछ कॉमन नहीं है, तो सारे प्राइम फैक्टर एटलीस्ट तो आने ही पड़ेंगे. अगर इफ नंबर इज मल्टीपल ऑफ फर्स्ट नंबर, देन ऑल इट्स प्राइम फैक्टर्स टू द रिस्पेक्टिव पावर शुड कम, एंड इफ नंबर इज मल्टीपल ऑफ सेकंड फैक्टर, all its different prime factors to the respective powers, they also have to come. So entire thing would be just multiplication of those two. Right? So if numbers are co-prime, then their LCM is product of those two numbers, and HCF is 1. ठीक है? कोई इशू, कोई भी प्रॉब्लम? करना है क्वेश्चन, ये करना है एनर्जी ना भी नहीं बोल सकते ना इसको तो. ट्राई इट आउट. इस साल का क्वेश्चन है, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. हाँ, क्या हुआ बताओ? आ गया आंसर? क्या बात है. दिस ईयर्स क्वेश्चन. कुछ पल्ले पड़ रहा है? समझ आया क्वेश्चन? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? समझा सकता हूं मैं. इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड देन आई कैन एक्सप्लेन. सी व्हाट इज हैपनिंग, देयर आर 3 signals, red, green and yellow, like we always have, and they are saying the color changes from green to red, then from red to green. तो एक टाइम पे एक क्लिक हो रहा है. The first signal takes 25 seconds, the second signal takes 39 seconds, and third signal takes 60 seconds to change color from
ग्रीन टू रेड। 3 अलग अलग सिग्नल्स है जो ग्रीन टू रेड होने की चल रही है प्रोसेस। फर्स्ट सिग्नल पे क्या हो रहा है, दैट टर्न्स फ्रॉम ग्रीन टू रेड आफ्टर 25 सेकेंड्स। तो फर्स्ट टाइम कब होगा, इन 25 सेकेंड्स होगा। सेकेंड, उसके बाद 50 सेकेंड बाद होगा, फिर 75 होगा, फिर 100 होगा। इन टर्म्स ऑफ 25 टाइम तो आगे बढ़ता जाएगा। इफ यू लुक एट इट इन द क्लॉक, तो एट 25 सेकेंड्स, एट 30 सेकेंड्स, एट 25 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, 75 सेकेंड्स, 100 सेकेंड, इस इंटरवल्स पे होता रहेगा। फॉर सेकेंड इट विल बी 39, 78, देन 117, ऐसा होता रहेगा वो। एंड फ्रॉम थर्ड सिग्नल इट इज 60, 120, 180, ऐसे होता रहेगा, राइट? सो दैट इज हाउ सिग्नल्स आर चेंजिंग। एंड दे आर सेइंग एट 2 PM, दोपहर 2 बजे वो साइमल्टेनियसली चल गए, एक साथ चल रहे थे। क्वेश्चन इज, अब अगला नेक्स्ट टाइम कब होगा? नेक्स्ट टाइम व्हेन विल दे लिट अप टुगेदर? ठीक है, तो ये 25 पे हो रहा है, 50 पे हो रहा है, 75 पे हो रहा है, एटसेट्रा, ऐसे होते जा रहा है। वो वाला 39 पे हो रहा है, 78 पे हो रहा है, अब बदल रहा है ना फ्रीक्वेंसी। तो अगली बार वो मैच कब करेंगे? अभी तो 2 बजे तो मैच कर लिया, when will it match next day? That is the question. तो ये 25, 50, 75 ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये जा रहा है 39, 78, ऐसे कुछ कुछ जा रहा है। एंड थर्ड वाला जा रहा है 60, 120, ऐसे कुछ कुछ जा रहा है। यहां पे तो स्टार्ट में दे स्टार्टेड टुगेदर एट 2 PM। अब अगला कॉमन कब होगा? हाँ, मतलब कितने टाइम के लिए वो ग्रीन रह रहा है। सिग्नल लेटर से हर सिग्नल कुछ 50 सेकंड के लिए ग्रीन रह रहा है वो, तो वो उससे फर्क नहीं पड़ रहा। दैट इज व्हाट दे वांट टू से। ये बाकी सब कुछ सेम है सिग्नल्स का, बस ये इंटरवल अलग है चेंज होने का। बाकी जितने टाइम के लिए वो रेड से रहेगा, जितने टाइम के लिए वो ग्रीन रहेगा, वो सब सेम रहेगा। सो दैट इज रिडंडेंट एज फार एज द कैलकुलेशंस आर कंसर्न। वो सबके लिए सेम है। द ओनली थिंग दैट इज डिफरेंट इज दिस फ्रीक्वेंसी। क्या लग रहा है, क्या फीलिंग आ रही है? कौन से चैप्टर का सवाल होना चाहिए? एलसीएम का होना चाहिए, 25, 50। सो डू यू नो हाउ टू कैलकुलेट एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स? अब देखो, 2 का नहीं पूछा है उसने। वी हैव टू कैलकुलेट एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स। द मोस्ट एफिशिएंट मेथड वुड बी प्राइम फैक्टराइजेशन। व्हाट इज द एलसीएम? कैलकुलेट of 25, 39 and 60. ये तो सेकंड है ना, कन्वर्टेड इनटू मिनट्स। Okay, yes, answers are right. You are Ashwini, Amrita. Those are correct answers. क्या आया एलसीएम? सबका आ रहा है। This is 5 square, this is 3 into 13. 60 is 2 square into 3 into 5. Right? Now LCM is 2 square आना चाहिए, 3 वह एक बार आना चाहिए, then 5 square आना चाहिए and 13 आना चाहिए. This is your LCM, right? मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? These many seconds, ये seconds में आएगा ना, ये seconds है क्योंकि 25, 39, 60, these are seconds. If you want to convert it into minutes, you here only divide by 60. मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने से अच्छा इधर ही डिवाइड कर लो, कोई बात नहीं है ना। सो ये 10 कटा दो, 2 and 5 कटा दो, या तो सेकंड में कन्वर्ट करके मिनट में करना है तो वो भी कर लो। मैं सीधा डायरेक्टली मिनट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। सो हियर आई डिवाइड बाय 60, आई गेट मिनट्स। हाउ मेनी मिनट्स आई गेट? 65 minutes,
right? I'll get 65 minutes. So after 65 minutes they will again be turning back together. अगर मतलब हर 0 सेकेंड के लिए वो चलते, ग्रीन हुआ 0 सेकेंड के लिए रुका फिर से चेंज हुआ, ऐसा होता तो 65 मिनट में हो जाता, बट दे हैव सेड दैट कुछ फिक्स टाइम के लिए होगा वो, तो शायद 65 से ज्यादा आंसर होगा, बट कॉमन मल्टीपल के टर्म्स में ही होगा. व्हाट इज द नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल? 65 into 2 would be 130. 130 minutes after 4 at 2 o'clock. 410. Common multiple चाहिए ना हमें. So this is the least common multiple we got. Every common multiple is a multiple of least common multiple. So अगला जो common multiple है, that would be multiple of LCM. 65 into 2. हाँ. नहीं नहीं. हाँ. वो लैंग्वेज छोड़ो. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. यही होगा ना कि कुछ टाइम के लिए रहेगा वो ग्रीन, ऐसा थोड़ी कि 1 सेकंड में बंद कर देंगे, मतलब इवन एट दैट इंस्टेंट. बट एनीवे, एनी कॉमन मल्टीपल इज अ मल्टीपल ऑफ योर एलसीएम. अगर 65 वाला ऑप्शन में होता तो वो मार्क कर देते, 130 120 130 वाला है तो वो मार्क कर देंगे, अगर 130 वाला भी नहीं होता तो अगला मल्टीपल मार्क कर देते. सो एनी ऑप्शन दैट सेटिस्फाइज अवर this condition, that every common multiple is multiple of our LCM, that is what we'll utilize. So it is 410 is the answer. Easy enough. Standard question था. हम बाकी PYQs देखेंगे, then you'll realize that this is again frequently appearing question. ठीक है, ये सेकंड्स में आया हमारा आंसर. These many seconds आया LCM, मैंने मिनट्स में कन्वर्ट किया उसको. हाउ डू यू कन्वर्ट सेकंड इनटू मिनट्स? 60 से डिवाइड किया, सो आया 65. 65 मिनट्स आया मेरा आंसर ना. तो 65 मिनट्स बाद वो सिंक हो रहे फिर से. हाँ, तो 65 बाद होंगे, फिर 130 के बाद होंगे, फिर उसके बाद प्लस 65 पे होंगे, ऐसा. तो 2 बजे के बाद 65 वाला तो ऑप्शन है नहीं, तो 130 के बाद वाला ऑप्शन है, तो मार्क कर दिया. ठीक है, विल कंटिन्यू टुमारो. क्लास होगी यहाँ पे अभी. ओके गाइस, हैव अ गुड डे ऑनलाइन स्टूडेंट्स. इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो. स्टार्ट सॉल्विंग योर वर्कशीट्स नाउ. Almost everything we have done. If you have any doubts in worksheet, we can discuss in class.